and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक जयंता दास। जयंता दास, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार विशाल। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, अंग्रेजी में अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Key domestic stocks logged gains of more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 58,400 level. Nifty ends above 17,450 points. Rupee weakens to 74 rupees and 81 paisa against the US dollar. And Brent crude prices hover around $90.50 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 58,400 और निफ्टी 17,400 के स्तर से ऊपर हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 74 रुपये 81 पैसे के स्तर पर हुआ बंद। और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $90.50 प्रति बैरल के आसपास। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले शेयर बाजार। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 58,400 जबकि निफ्टी 17,400 के स्तर से ऊपर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 657 अंक के उछाल से 1.14% बढ़कर 58,466 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.14% की वृद्धि से 197 अंक ऊपर 17,464 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन सेंसेक्स से कमजोर रहा। मिड कैप इंडेक्स 0.45% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% लुढ़क गया। The Sensex and the Nifty today gained more than 1% amid positive global cues. The Sensex closed above 58,400 points while the Nifty ended above the 17,400 level. The Sensex climbed 657 points or 1.14% to end at 58,466 while the Nifty surged 197 points, again 1.14% to end at 17,464 when 17,464. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap underperformed the Sensex. The mid-cap declined 0.45% and the small-cap index plunged 1.4%. In the Sensex pack, shares of 27 companies climbed while 3 fell. Maruti was the top gainer as it surged 4.1%, followed by IndusInd, which added 3.1%. HDFC Bank gained 2.5% and Bajaj Finserv rose 1.8%. On the other hand, Sun Pharma lost 0.9% and ITC declined 0.5%. Sectorally, all indices gained except oil and gas, which slipped 0.4%. Auto index surged 2.2%. Consumer durables climbed 1.8% and metal added 1.6%. In the BSE trade, shares of 1,661 companies gained, while 1,685 fell. Shares of 99 companies remained unchanged. Janto, we saw today it's been more than a little over 1% rise in the markets ending in green. Yesterday again the markets ended in green, but there was a very marginal increase. And prior to that there was 3 days of red in the market. There was a bearish trend in the market. What do you attribute this rise of more than 650 points in the Sensex today to? Well, I guess what you said in the headlines was there was an influence of international markets. But then having said so, what I also believe is there has also been a domestic sectoral influence, specifically, with the 657 points lead being basically stressed out or focused on bank, IT, auto and metal sector. So on a whole, what I also believe is taking a cue from what the budget had to offer as a roadmap for India for the next 12 months, next fiscal. I guess there is a positive cue in the market in terms of what's happening. Of course, we cannot insulate ourselves from international markets, and the geopolitical tensions would have its weight with the weeks to come.
while we do see some choppy markets in the extremely short term, but I guess the mid-term and the long-term does look quite rosy at this point of time. जी जयंता, आज हम अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आज काफी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का। इसमें क्या बिकवाली ही एक वजह रही है गिरावट की या कोई और भी वजह मानते हैं आप? देखिए विशाल, ये मैं मानता हूँ कि खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवरऑल जो एक मार्केट का ड्रिफ्ट रहा पिछले बजट के बाद, अगर पिछले 4-5 दिन का, खास करके विदेशी बाजारों की वजह से जो एक अलग से गिरावट भी आए हुए थे, उससे रिबाउंड होना मिड कैप्स और लोअर कैप्स में थोड़ा बहुत दिक्कत रहा, जो आज का मार्केट बता रहा है। लेकिन ये जरूर मैं मानता हूँ कि सेंसेक्स 11 स्टॉक्स में अगर थोड़ा बहुत उछाल आया हुआ है, जरूरी नहीं है कि उछाल सस्टेन हो, लेकिन अगर इस लेवल सेंसेक्स में अगर सस्टेन हो 50 to 60,000 लेवल आने वाला हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता तक, तो भी मार्केट के लिए काफी हेल्दी रहेगा। जी, और आज अगर हम देखें तो एक मारुति टॉप गेनर रही है और निफ्टी ऑटो जो है 2.19% की बढ़त में रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम ऑटोमोबाइल सेल्स के जो जनवरी के जो आंकड़े आए हैं, वो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के, वो ये बता रहे हैं कि कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में जो है 10% की गिरावट रही है। तो ये जो विरोधाभासी जो कुछ बात है, ये इसको हम किस तरीके से समझें इसको? देखिए, इसमें आपका बात सही है। जहां पे पैसेंजर क्षेत्र का जो वाहन है उसमें के 4 पहिया वाहनों में अगर भारी गिरावट, करीबन 10% गिरावट काफी ज्यादा होता है, तो इस तरह का गिरावट का स्थिति अगर बने रहे तो मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जनवरी में देश भर में एक ओमिक्रॉन का अनिश्चयता था जी। और हालांकि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है वो डेल्टा का साथ अगर आप कंपेयर करें उसमें तेजी उतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क, ये वगैरह हुए हैं। तो ऐसा स्थिति में मैं मानता हूं कि ऑटो क्षेत्र का जो प्रदर्शन रहा, खासकर के 4 पहिया वाहनों में या पैसेंजर व्हीकल्स में, वो एक सही रूप से हम एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रदर्शन नहीं ले सकते। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने कहा, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ऑटो क्षेत्र का काफी अच्छा उम्मीद 2 वजह से है। एक तो वजह यह है कि ईवी का जो क्षेत्र है, खास करके ऑलमोस्ट सारे कार मैन्युफैक्चरर्स अब ईवी का तरफ ध्यान दे रहे हैं, और खास करके लग्जरी सेगमेंट अगर देखा जाए, जैसे BMW हो गया या इवन मर्सिडीज हो गया, वो पूरा अपना प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को फिर से रिवर्क करने का बात कर रहा है पूरा अगले साल। इन टर्म्स ऑफ ईवी का क्या प्रभाव रहेगा, ईवी का ड्यूटी कट्स क्या रहेंगे। इस बार ईवी के ऊपर डायरेक्ट ड्यूटी कट्स का तो कुछ बात बजट में आया नहीं है, लेकिन ये जरूर आया कि बैटरी स्वैप वगैरह का जो भी पॉलिसीज आया है, जो मैं मानता हूँ काफी अच्छा मतलब स्टेप रहा और रहेगा आने वाला ईवी को ओवरऑल इंटीग्रेट करना ऑटो क्षेत्र में। इसके अलावा सरकार का जो नीतिगत रूप से जो एक बात हुआ है, जहां पे जितना भी नेशनल हाईवेज है उसमें करीबन हर 60-70 किलोमीटर या 40 से 60 किलोमीटर का अंतर में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो ये सारे चीजें बहुत बहुत ज्यादा एक प्रॉमिसिंग सेक्टर ऑटो के लिए माना जाएगा। खास करके नितिन गडकरी जी ने भी एक बार नहीं काफी बार उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में ईवी का जो प्राइस का जो स्टैंडर्ड्स है वो एक ऑटो क्षेत्र में पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स का साथ बराबर मुकाबला करेंगे। ऐसा नहीं कि ईवी आपको अलग से महंगा लगेगा। तो सरकार का ये जो निर्णय है कि ईवी का रूप से एक बहुत जल्दी सिर्फ इकोसिस्टम नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना, उसका ऊपर मैं मानता हूं कि सीधे के सीधे ऑटो क्षेत्र में बहुत 2 पहिया वाहन के बारे में बात करें या 4 पहिया के वाहन के बारे में बात करें, एक अलग से प्रभाव बेशक आएंगे। और जिस वजह से मिड टर्म क्षेत्र में मैं मानता हूं, खास करके इंडिया जैसा देश जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट मुश्किल है, लेकिन काफी क्षेत्र में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट इतना तेजी से कर दिखा है पूरा विश्व भर में। अगर आप देखें तुलना करके, जैसे टेलीकॉम का रोल आउट इंडिया में इस तेजी से हुआ है, पूरा विश्व में इतना तेजी से आज तक कोई टेलीकॉम क्षेत्र में रोल आउट हुआ नहीं है। नॉट ओनली रोल आउट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन प्राइसिंग। तो ईवी में भी लोग मानते हैं कि ऐसे एक रेवोल्यूशन शायद आए आने वाले 2 साल का अंतर, जहां पे हम प्राइस ऑफ कार्स तो है ही, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट, क्योंकि सबको पता है एक पेट्रोल पंप लगाना जितना मुश्किल है, एक ईवी स्टेशन लगाना उतना ही आसान है नीतिगत रूप से अगर सपोर्ट मिले तो। और सबसे अच्छी बात यह कि जितना भी राज्य है वो अलग से सरकार के साथ, केंद्रीय सरकार के साथ नीतिगत रूप से भी अलग से अपना राज्य में उन्होंने पॉलिसीज लेके आया है, जहां पे ईवी का
विस्तार बहुत जल्दी से हो और बहुत अच्छे से हो। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और नीतिगत सपोर्ट से ऑटो क्षेत्र का खास करके बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ईवी अगर अफोर्डेबल हो जाता है और अगर एक अच्छा शिफ्ट हम देखते हैं ईवी की तरफ, तो नॉट ओनली लाइफस्टाइल बट इवन इकोनॉमिक क्लाइमेट के दौर से एक जो सबने वादा किया कि 2030 तक एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लाइमेट सारे विश्व भर में जितना भी 100 से भी ज्यादा देश है अलग से उन्होंने प्रॉमिस भी किया, कमिट भी किया है, तो इस पर बहुत जल्दी हम कहीं ना कहीं पहुंच रहे। चर्चा जारी रखेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra, where we are talking to our expert today, Jayanto Das. Jayanto, we were talking about the markets right now before going into the break, and one of the factors that affect the markets are the behavior of the foreign portfolio investors. Now, the FPIs have pulled out more than 6,834 crore rupees from Indian markets in the first 4 trading sessions of February, and in January also there was a sizable exodus of FPI investment. What are the reasons and how do you see it affecting the markets? Well, the basic focus and reason would be obviously, with the rate of interest, chances of rate of interest being raised in the US market, which has a direct bearing on the FPI money coming into India, going out of India. I do believe that there will be the dark clouds of FPI money going out furthermore from here on if, the tightening of the economy is more prevalent in the US markets. But having said so, I also believe that domestic markets, while they can have a good performance in terms of interest and investment flows, obviously you have a very right question in terms of FPI outflows. If they keep on getting sustained, the outflows in a very specific manner, they would have important challenge for the markets to focus on, because not only breaching the 60,000 marks again, but remaining above 60,000 would be a challenge. And what is the bond yields? Bond yields are at an all-time high right now, and that is also affecting the market. So what if the bond yields continue to rise? How will that affect the markets? Well, as I said, the pressure would be there in terms of how the markets take shape, both based on the rate of interest as further to the bond yields and all. But overall, what we need to understand is, at this point of time, while Sensex should not take off our sleep, what we need to understand is sectorally how well we perform. Because after the third wave getting over, and with the, the intensity of the third wave much lesser, although the reach has been much wider, but with the intensity much lesser than the second wave, there is obviously a viewpoint that says that maybe the worst is over now in terms of the virus taking its toll overall globally. So now it's time for governments, not only India but for all governments, to sit back and to revive the economy as fast as possible. There was stopgap arrangements, there were stopgap policy measures. US, poured in a lot of cash flow into the economy and all things like that, but a lot of them didn't get translated into consumption. In India's case also, I was hearing the, Secretary Finance, and who shared a very post-budget, who shared a very important information where he said in Jan Dhan accounts, when they put up money, as cash, direct cash, it was not necessary that the cash was getting translated to consumption. The cash was, most of them were getting translated to savings. So these are important facts to see. How do we bring back the demand in a sustained manner into the markets as well as into the economy, and how to take it up from here on? But having said that, FPI and the bond are obviously a cause of worry at this point of time as a dark cloud. जी जनता, हम ये जानना चाह रहे थे कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर के अभी भी सस्पेंस कायम है, ये कब बढ़ेंगी, और अगर बढ़ती हैं तो इनके बढ़ने से, ब्याज दरों के बढ़ने से फेडरल रिजर्व की उभरते बाजारों पर, इमर्जिंग मार्केट्स पर आप क्या असर देख रहे हैं? देखिए, कब बढ़ेगा ये तो खैर ये कहा जा रहा है, कोई ऑफिशियल न्यूज तो इसमें आएंगे नहीं, बट ये जरूर कहा जा रहा है कि शायद एज अर्ली एज मार्च, अंत अप्रैल से ही रेट कट शुरू हो जाए. पूरा साल, मतलब कैलेंडर ईयर अगर बात करें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, करीबन
5 या 6 रेट कट को उम्मीद किया जा रहा है, करीबन 25 बेसिस पॉइंट तक एक रेट कट। तो हालांकि वो निर्भर करेंगे जो एफएमसी का जब मीटिंग होता है उस मीटिंग के ऊपर, फेड का जो मीटिंग होता है उस मीटिंग के ऊपर निर्भर करेंगे, और साथ में ये भी निर्भर करेंगे मौजूदा पिछले 3-4 हफ्ते का स्थिति मीटिंग के दौरान कैसे रहा और आने वाला 4-6 हफ्ते लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। पूरा साल भर का प्रेडिक्शन लोग इस वक्त कर नहीं सकते। जी जयंत, विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन बट विल हैव टू गो इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर। 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra, where we are with business analyst Jayanta Dastridad. Before going into the break, Jayanta, we were talking about the US Fed, Fed's announcement of a rate hike and how it will affect the emerging markets. So, please, how do you think it's going to affect emerging markets like India? Well, obviously, any rate hike, given the steepness and the promptness of the hike, would have a much more immediate dent in terms of realignment of portfolios. And this is obviously a supplementary question compared to what you asked me just a little while ago. But having said that, I would still like to say there would be likely a realignment portfolios, but it also depends on 2-3 more things. One is how the geopolitical alignment is happening in the next 3-4 months, because we do expect some stress and tension happening both in the Eastern European part as well as maybe in the Taiwan Chinese region. That's one part. The second part also would be in terms of how fast economies are able to bring back the steam of economic growth post-COVID. So if I call it a post-COVID, I mean, although fingers crossed, it's a bit early, a tad early to call, not bit early, a tad early to call it a post-COVID either. So taking these two facts, there will be seriously a portfolio allocation. For India's case, I guess its strength would lie in the huge commitment they have made on the expenditure side, specifically in infrastructure. So I do believe at least the demand flow and the income generation from there on would have an impact. And Jayanta, talking about the US Fed and the expected rate hikes, now tomorrow the RBI, there is the RBI the MPC meeting is on right now, and tomorrow the announcements are due. What is it that you are expecting from this meeting? Well, I believe the status quo would be maintained at this point of time. Although I'll be happy if there is a marginal increase in the repo rate, because at least in the interest rates, because there is cause of worry in terms of inflation, and this cause of worry has been lingering on for long. It's not a short-term cause of worry. It has been happening for the last at least 10 to 12 weeks. So it's important to understand the fact that how the government tries to balance it. But having said so, what I also believe is at least 2 major states are going in for election. And that could be one reason maybe they would not like to tinker with the interest rates immediately. And what are the biggest challenges, do you think? Like you just mentioned, the inflation, of course, is one of the biggest challenge, and the fact that, do you think and the crude oil prices also increasing? So, and the domestic market, pressure from the domestic money market is also there because of the rising bond yields that we just discussed. So, how big are the challenges before the RBI? Well, then RBI, obviously, being the monetary policy specialist, they have to take a call completely focused on where inflation is headed at this point of time. I think that's the first, should I say, checklist, which, in fact, not the first, the top 3 checklists would they like to focus on. But having said so, as I said, I think they would like to still hold a cautious observatory policy at this point of time and hold on to any tinkering of interest rates. जी, और अब प्रदर्शन नजर डाल लेते हैं घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज ₹6 कमजोर होकर $1 के मुकाबले ₹74.81 के स्तर पर बंद हुआ।
विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.24% की गिरावट से 95.41 रहा। रुक करते हैं एशियाई बाजारों का। वॉल स्ट्रीट पर मजबूत कारोबारी सत्र के बाद एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। अमेरिका में इस सप्ताह आने वाली महंगाई के आंकड़ों से पहले अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हांगकांग के हैंगसेंग में आज 2.1% और जापान के निकेई में 1.1% का उछाल आया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और कोरिया के कोस्पी दोनों में 0.8% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स 0.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यहां भी तेजी का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.7%, फ्रांस का कैक 1.4% और जर्मनी का डेक्स 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US markets, the Wall Street ended sharply higher yesterday, lifted by Apple and Microsoft, while a jump in Treasury yields elevated bank stocks ahead of a key inflation reading this week. The S&P 500 added 0.8%, the blue chip Dow Jones ended 1.1% up, and the Nasdaq Composite Index gained 1.3%. And now it's time for another break. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाए। समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to the program Market Mantra, and Janto, I want to ask you something else, slightly different now, moving away from the RBI MPC meeting, which is tomorrow. Announcements are due tomorrow. Today, the Revenue Secretary has come out and said that the government is open to some tinkering in the varied rates and holding period for computation of capital gains tax in a bid to make it simple. Because he's admitted that, that the structure is quite complicated and hence there's a need to relook. How do you look at this? Computation of the capital gains tax. The Revenue Secretary today came out and said that, government is open to some tinkering in the varied rates because it said the current rate structure is a little too complicated. So, we need to know what exactly is being put on offer on the table. I completely agree when, there is basic acceptance from the government's viewpoint in terms of, a complexity of, the structure. And as I said, any government of the day should always focus when it comes to taxes to make it simpler and at least make it much more well-defined than keeping too many complicated structures and all that. So we surely would like to welcome it, and let's see what sort of tinkering they are promising or what sort of tinkering has been put on the table. But obviously any simpler tax structure which makes compliance easier benefits both the taxpayer as well as the tax collector. And coming back to the markets earlier, when we said that today we saw that the broader markets underperformed vis-a-vis the Sensex and the Nifty. So in the coming days, how do you see the mid and the small cap outlook? What do you see in the coming days, the outlook for the mid and small cap? Well, I believe both the mid cap and small cap will not be able to weather the storm as fast as what the large caps have done. There has to be a established, sustained momentum in the stock markets for a broad-based rally to be seen in the small caps and mid-cap sector. Having said so, I also would like to say that there will be some good performers obviously in the mid-cap sector. So anyone who is actually looking to pick up its specific stocks which they have a strong appetite to pick it up, I think even in falling markets, it's a good option to go and just grab them. And before the economic survey this time has said that the GDP growth has been predicted as at 9.2%. So given that, what are the MSME prospects? Because that is one of the sectors that were, small cap and the MSME and the SMEs were the sectors that were the most affected during the pandemic. What are the prospects for these sectors? See, I would like to have the question formed in a reverse manner. Okay. What I believe is more than the prospects. What we should see is how sustained policy measures keep on coming in to support this MSME sector, which is not only the largest employer, but also one of the main contributors of GDP. As I said previously also in the same show, most of the Western European nations have a major portion of their
GDP being contributed by MSMEs. And I guess that's a good reflection of what India has in store, given the vast network of MSME sectors. What needs to be seen is both the state government as well as the central government in how much of a sustained manner are able to see to it, both in terms of policy as well as in terms of finance, the support to these MSMEs, so that not only they sustain, they grow from here, because they are one of the main wheels of economic growth in India. Right. And another set of data which has come out today is the exports, India's exports data, which is a prelim data by the Commerce Ministry, which says that 28.51% growth in the Indian exports in the period of February 1st to 7th. Good sign. Very brief comment. Yeah, surely. I mean, I guess, as I said, in this downward tapering COVID era, where cases are now going to get settled down faster, it's important for India to go back to a global market in terms of exports, and these are certainly encouraging figures. Moving on to commodities, oil prices today logged marginal losses in intraday trade. Brent crude was trading around $90.50 per barrel, while WTI crude prices were at $89 per barrel. A very brief comment, still crude prices still hovering above 91. Prices will remain. I mean, so long as the geopolitical tension is there in the horizon, not in the horizon, rather it's much more near the horizon actually. Exactly. I do believe the pressures will remain. Right. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल अनुबंध के सोना 50 रुपए की तेजी से 48,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 150 रुपए की मजबूती से 62,515 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना बढ़त के साथ $1,828 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ $23.30 प्रति औंस पर चल रही थी। जयंता, सोने में अब तेजी का रुख दिख रहा है क्या? और मैं मानता हूं कि आने वाले 1-1.5 साल सोने के लिए काफी अच्छा रहेगा, खास करके डिमांड का रूप से। जी। And right now we'll have to say a thank you to Jayanto for joining us on this program as we come to a end of this program. Jayanto, thank you so much for joining us. जी, और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर फिर से डाल लेते हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 58,400 और निफ्टी 17,400 के स्तर से ऊपर हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर $74.81 के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $90.50 प्रति बैरल के आसपास। Key domestic stocks logged gains of more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 58,400 level. Nifty ends above 17,450 points. Rupee weakens to 74 rupees and 81 paisa against the US dollar. And Brent crude prices hover around $90.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar. Namaskar.